Hello, welcome. Hi, Sharik. Hi, Sufyan. Thank you for joining. Hi, Subhan. Hello, everyone who's joining. We'll just give it a couple of minutes. I hope you have your questions ready. कैसा गया आप लोगों का सैटरडे? Alright, as soon as 12:04 होंगे तो we'll start talking. Meeting deadlines. कुछ नया बताएं. Meeting deadlines तो बहुत पुरानी बात होगी. कुछ नया बताएं. एंड मैं पहले से अपोलोजाइज़ कर रही हूँ अपनी आवाज़ के लिए. मेरी एक्चुअली तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है पिछले दिनों, और मुझे एक्चुअली आज सुबह भी बहुत तेज़ बुखार था. मैं अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर से ही होके आई हूँ कि मुझे एक्चुअली यहाँ का जो फ्लू होता है, यहाँ का फ्लू कुछ और फ्लू होता है, तो वो हो गया था. तो उसकी वजह से मुझे तकरीबन आज 5वां दिन है, मुझे कांस्टेंट फीवर था 101. तो मैं पैनाडॉल खा खा के उतारी थी. तो इसलिए अब थोड़ा इस टाइम थोड़ा बेहतर है क्योंकि मैंने दवा खाई हुई है, तो हुआ हुआ है. लेकिन बीच में अगर बहुत एक गंदी सी कफ की आवाज़ आए, आपको खांसी की आवाज़ आए, तो प्लीज़ फॉरगिव मी. मैं म्यूट नहीं कर सकती इसे बिफोर कफिंग. थैंक यू. चलिए 12:04 हो गए हैं, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आई नो मतलब लास्ट टाइम भी मैंने लाइव किया था, तो पीपल कीप जॉइनिंग इन द मिडल एंड स्टफ, सो दे कैन जॉइन वेन एवर दे वुड लाइक टू. बट फॉर नाउ whoever has joined, let's start talking. सो आई एम श्योर जिन्होंने ज्वाइन किया है वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानते ही होंगे, तो इसलिए ज्वाइन किया है. सो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज सच. बट सो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट ऑफ. सो आपने जो भी क्वेश्चंस डालना स्टार्ट करने हैं वो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं. जस्ट कीप एड्रेसिंग देम वन बाय वन. Many of you would probably know one of the recent changes in my professional life was that I left KPMG. I was working in KPMG Consulting, और मैंने वो छोड़ा है मतलब recently around अभी 1 month ही हुआ होगा छोड़े हुए. And I joined another company, and I've moved to industry now, and I have moved to a strategy position, so it's like a kind of like a different role now. So मेरी लाइफ में तो मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट ये है. अब आप लोग बताएं what questions can I help you guys with. अभी तक तो I don't see any questions as such. So ACCA outlook in Ontario. Stacy Daniel. Okay, so ACCA outlook in Ontario. ACCA actually widely recognized as. So I'm not sure आपको उर्दू समझ आ रही है या यहाँ पे ऑडियंस किस तरह की है, बट आई एम गोइंग टू कीप इट अ मिक्स ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई प्रॉमिस्ड. तो ACCA आउटलुक जो है वो ये है कि यहाँ पे पहले ये होता था कि ACCA पे आपको एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट था, जो आपको CPA की सर्टिफिकेशन मिल जाती थी विदाउट गिविंग एनी एग्ज़ाम्स. फिर जो वो रेसिप्रोकल अग्रीमेंट था दैट फिनिश्ड, वो एक्सपायर हो गया था. तो उसके बाद से अब थोड़ा सा लाइक नहीं पता कि ACCS को क्या करना होता है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देयर ACCA इनटू CPA कैनेडा.
तो लेकिन इवन देन ACCAs don't usually find a problem in find looking for a job in Ontario. It is मतलब वही है कि फर्स्ट जॉब ढूंढना थोड़ा सा टफ होता है, बट आफ्टर दैट it's easier. However, usually कुछ organizations का ये ज़रूर होता है कि they want you to work towards a CPA while you're working. तो basically आपको job मिल जाती है, but then they want you to appear in, अगर आपको ACC के बाद एक एग्ज़ाम देना है तो to convert it to CPA, तो they would want you to do that. उसको वो usually sponsor भी करते हैं. तो ये है, but out मतलब otherwise scope is like really good. ओके, सो यू अंडरस्टैंड उर्दू. आपका नाम बहुत अलग है, तो इसलिए मुझे लगा पता नहीं. वाई यू लेफ्ट फर्म? लोडेड क्वेश्चन. फर्म मैंने काफ़ी सारे रीजंस की वजह से छोड़ी है. मेरा काफ़ी टाइम गुजर गया था. एक तो पहले KPMG में, मैं शुरू से ही मैं KPMG में थी. तो इसलिए काफ़ी लंबा टाइम हो गया था KPMG में. मैंने आर्टिकलशिप भी वहीं से की थी, तो एक तो मुझे थोड़ा सा चेंज भी चाहिए था. दूसरा ये भी था कि यू कैन से मतलब वर्क लाइफ बैलेंस मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था मैनेज करना. जो लोग मुझे अदरवाइज़ इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करते हैं, दे नो कि मेरी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं. तो अब वो आई डोंट वांट टू, मतलब मैं उन एक्टिविटीज़ को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती. और अब तक मैं बहुत अच्छे से मैनेज करी थी, और अभी भी मैं मैनेज करी थी. तो मतलब अगर कोई मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करता है तो उनको ये बात पता होगी कि इवन लाइक इन द लास्ट ईयर, 2 years, 3 years, लाइक मेरी वो सारी एक्टिविटीज साथ साथ चल रही थी. इट्स जस्ट दैट वो इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट होती जा रही थी. तो वो फिर मुझे हो रहा था कि लाइक उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी कि मेरे पास टाइम उस चीज़ का कम होता जा रहा था जो मेरी आउट ऑफ वर्क एक्टिविटीज़ है. बिकॉज काम सिर्फ काम है, उसके बाद की भी लाइफ होती है, उसके आउटसाइड आपकी बहुत लाइफ होती है, पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं. तो इसलिए फिर मैंने एक तो आई थिंक 30-40% रीज़न ये था कि वर्क लाइफ बैलेंस बेटर करना था मुझे अपनी लाइफ में. चेंज चाहिए था मुझे. फाइनेंशियली बेटर होता है व्हेन यू मूव टू इंडस्ट्री ओवर हियर. और दूसरा ये कि यहाँ पे फर्म बहुत स्पेशलाइज्ड होती है. तो मैं जो करी थी, मैं थी ट्रांजैक्शन सर्विसेज में, विच इज़ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस एडवाइजरी में. तो उसमें होता है कि आप सिर्फ वही कर रहे होते हो फिर सारा टाइम, तो वो थोड़ा सा रेपिटेटिव हो जाता है. मैं ऑडिट में तो नहीं थी, ऑडिट तो और भी रेपिटेटिव हो जाता है, बट इवन माई फील्ड वो एक ही सर्विस लाइन में होते हैं आप यहाँ पे. वेर एज वेन आई वॉज इन पाकिस्तान KPMG, तो उसमें होता है थोड़ा आप डिपेंडिंग ऑन लाइक आप किस पार्टी के साथ काम कर रहे हो, आपको वैरायटी ऑफ वर्क मिलता रहता है. तो वो थोड़ा एक जैसा हो रहा था काम. तो अब फिर मैं आई वांटेड टू मूव टू अनदर लाइक रोल जिसके अंदर मुझे थोड़ी वैरायटी मिले. तो अब जो मैं स्ट्रैटेजी रोल में जिसमें मैं गई हूँ, वो एक्चुअली बहुत अकाउंटिंग रोल भी नहीं है. लाइक मेरे अकाउंटिंग स्किल्स वहाँ पे आई गेस 20% यूज़ होंगे. बाकी सारे जो हैं वो मोर क्रिएटिव है, मोर रिसर्च बेस्ड है. तो इसलिए मुझे थोड़ा सा उस मामले में भी चेंज चाहिए था कि आई वॉज डन विद जस्ट लुकिंग एट नंबर्स एंड दैट स्टफ अगेन एंड अगेन रेपिटेटिव. तो काफ़ी सारे रीजंस मिला के तो मैंने ये डिसीजन लिया. बट ऑफ कोर्स जो भी मैं आज हूँ वो KPMG की वजह से हूँ. बिकॉज आई डोंट मतलब whatever, like I started with KPMG, been there with KPMG for so many years, and whatever I am today is because of KPMG. So that was the summary. After CA qualification, can we move to Canada? Just 1 year experience. 1 year experience थोड़ा कम है, but move आप फिर भी कर सकते हैं. डिपेंड करता है आप किस बेसिस पे मूव कर रहे हैं. यूजली अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको पॉइंट्स कम मिलेंगे, बिकॉज आपका अगर 1 year एक्सपीरियंस है. अगर आप आर्टिकलशिप को काउंट करें तो 4 years एक्सपीरियंस है, फिर आपको एक्सप्रेस एंट्री का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. बट ओवरऑल जो है यहाँ पे फिर भी आके आपको कनाडा एक्सपीरियंस बनाना होता है, उसके बेसिस पे आपको बेटर जॉब्स मिलती हैं. बट मूव डेफिनेटली किया जा सकता है. देयर आर मैनी वेज टू मूव. व्हाट अबाउट डूइंग इंडस्ट्री आर्टिकल्स एंड देन जॉइन इंडस्ट्री इन कनाडा? बिल्कुल ऐसा हो सकता है आयशा. इंडस्ट्री आर्टिकल्स करके आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं कनाडा में. द ओनली थिंग इज़ कि आपको मतलब रूट ढूंढना है आपने कि आना कैसे है. आप फॉर एग्जांपल आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं और फिर आप आ जाती हैं कनाडा. तो उसके बाद आपको यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपने इंडस्ट्री आर्टिकल्स किए, वहाँ पे आपने थोड़ा टाइम वहाँ पे काम भी किया, अब आप वहाँ पे मैनेजर रोल पे थे, तो आपको ये ज़रूर आइडेंटिफाई करना है कि कनाडा में कनाडा एक्सपीरियंस को बहुत वैल्यू किया जाता है.
तो जब आप आएँगे तो यहाँ पे आपको होगा कि मैं मैनेजर थी तो मैं मैनेजर पे ही आऊँगी, तो देयर इज़ अ स्लाइट चांस और एक्चुअली देयर इज़ अ हाई चांस कि आप मैनेजर रोल पे नहीं आ पाएँगे। आपको एक अपने ज़हन में थोड़ा-सा डिमोशन लेना पड़ेगा, लाइक 1 लेवल डाउन, क्योंकि यहाँ पे वो कहेंगे कि हमें तो बेशक आपने 6-7 साल काम किया हुआ है, हमारे लिए यू आर न्यू, तो इसलिए वो थोड़ा-सा होगा। बट इसमें थोड़ा-सा फर्म्स का एडवांटेज आ जाता है कि फर्म्स में क्योंकि वो ग्लोबल रिकॉग्निशन होता है, तो उन्हें फिर भी आइडिया होता है कि अगर आपने वहाँ पे मैनेजर रोल पे काम किया हुआ है, तो यहाँ पे वो फिर भी आपको 1 लेवल डाउन पे लेंगे, लेकिन दे वुड स्टिल हैव एन आइडिया ऑफ योर एक्सपर्टीज़, तो वो आपको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला थोड़ा-सा फ़ायदा होता है बिग फ्रॉम मूविंग फ्रॉम फर्म, बट अदरवाइज़ इंडस्ट्री आर्टिकल्स एंड देन जॉइनिंग इंडस्ट्री इन कनाडा इज़ नॉट एन इश्यू एट ऑल। यहाँ पे आपके बस आके जॉब ढूँढनी है। फर्स्ट जॉब यहाँ पे ढूँढना सबके लिए इक्वली डिफ़िकल्ट होता है। मोहम्मद साकिब मसूद, मिस कैन वी मूव फ्रॉम फर्म टू इंडस्ट्री हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ ओनली एक्सटर्नल ऑडिट इन कनाडा एक्सेट्रा? बिल्कुल मूव कर सकते हैं। अगर आप फर्म से आ रहे हैं और कनाडा मूव हो रहे हैं तो आपको इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है अकाउंटिंग में, मतलब दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। सुफियान सईद, काइंडली ऑल्सो टेल अबाउट फ्यूचर ऑफ सी एस बिकॉज ऑफ ए आई इट विल इफेक्ट। ये सवाल मुझे बहुत दफ़ा लोग पूछ चुके हैं अब तक। देखिए, एआई जो मर्ज़ी कर ले, एआई जो है वो अ, आपको कुछ भी इवन देन करने के लिए आपको एक बेसिक सर्टिफिकेशन चाहिए होगी। लेकिन कंप्यूटर्स आए हुए बहुत टाइम हुआ है, राइट? कंप्यूटर्स कब के आए हुए हैं? कंप्यूटर्स में कैलकुलेटर भी है, कैलकुलेट कर सकता है कंप्यूटर, सब कुछ है। बट इवन देन आपको हर चीज़ के लिए सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही होती है ना, इन ऑर्डर टू डू समथिंग ऑन द कंप्यूटर, राइट? तो आपको किसी लेवल की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत हमेशा रहेगी। तो इसलिए ये ऐसा नहीं कि सीए की स्टडी आपकी बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएगी, या जो भी अकाउंटिंग डिग्रीज हैं वो रिडंडेंट हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। इट्स जस्ट दैट उसके बाद करियर्स की शेप बदलेगी, वो ऐसा ऐसा बदलेगी, उसके साथ वो जिस तरह बदलेगी उस तरह आप लोग भी बदलेंगे। तो इसलिए ये सोच लेना कि हम सीए ही नहीं करते क्योंकि एआई आ गया है तो हमारी तो जॉब ऐसे, दे विल ऑलवेज बी एजुकेशन, रिडंडेंट नहीं होगी कभी भी, एजुकेशन हमेशा लेनी ही होगी, चाहे जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी आ जाए। सो ये वाली चीज़ जो है ये क्लियर होना चाहिए। वर यू इन ऑडिट और एडवाइजरी? आई वॉज इन एडवाइजरी। How is advisory in Toronto? Advisory in Toronto is huge. It is big. It has so many different services कि मुझे मैं 2.5 साल गुजारे हैं कि पीएमजी टोरंटो में, और मुझे अभी तक नहीं पता कि कितनी टोटल सर्विसेज हैं और क्या क्या हैं, बिकॉज इट्स जस्ट ह्यूज, एडवाइजरी इज़ ह्यूज। शारिक, I hope you will be fine. I am CAF qualified. Should I pursue ACCA or CA final? I want to move to Canada in future. I can also obtain OBU degree only for ACCA students. अच्छा, should I pursue ACCA और CA final? बात समझी नहीं मैं कि मतलब, अच्छा आप कैफ क्वालिफाइड हैं। जब आप कैप क्वालिफाई कर चुके हैं और अगर आपका कैफ क्वालिफाई करने का जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, तो आई वुड रेकमेंड कि आप फिर सीए कंप्लीट कर लें रादर देन मूविंग टू अनदर डिग्री। अगर आपको कैफ का थोड़ा बम्पी जर्नी था और आपको लग रहा है कि सीए फाइनल करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो यू शुड आई गेस गो फॉर ACCA देन। एंड अगर आपको OBU की डिग्री मिलती है तो वाई नॉट टेक दैट टू। फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब सीए और ACCA की अपॉर्चुनिटीज़ इन कनाडा एक जैसी हैं, इफ़ नथिंग एल्स। एक्चुअली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यू डोंट नो 1 साल बाद क्या होगा, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सीए की बेटर है, बिकॉज सीए का एक क्लियर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है विद दी CPA ओंटारियो, जिसके अंदर हमें सिर्फ एक एग्ज़ाम लिखना होता है और हमें CPA मिल जाता है। ACCA का इस टाइम वो MOU एक्सपायर हुआ है, तो ACCA को क्लैरिटी नहीं है इस टाइम पे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे CA ICAP इज़ बेटर, बट ये चीज़ें बहुत चेंज होती रहती हैं, सो यू नेवर नो। सुभान कह रहे हैं, यू मीन देयर इज़ नो वर्क लाइफ बैलेंस इन कैनेडा?
नहीं, ऐसी बात नहीं है कि देयर इज़ नो वर्क लाइफ बैलेंस, ऑफ कोर्स देयर इज़ डेफिनिटली इट इज़ बेटर ओवर हियर। ऑडिट का खैर मैंने सुना है कि यहाँ भी कोई ख़ास अच्छे हालात नहीं है ऑडिट के, यहाँ पे भी फर्म्स में स्पेशली बिजी सीजन्स में यहाँ पे भी बहुत ही बुरे हालात रहते हैं। जो एडवाइजरी है इट इज़ डेफिनेटली बेटर। मेरा भी एक्चुअली काफ़ी बेहतर सीन ही चल रहा था। जस्ट दैट मेरा जो डिपार्टमेंट था दैट इज़ मोर लाइक यू कैन से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बिकॉज मैं डील एडवाइजरी में थी। तो इसलिए उसकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी थी कि उसके अंदर वो इंक्रीजिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही थी, तो इंक्रीजिंगली उसके अंदर मतलब काइंड ऑफ लाइक there's an inherent requirement in the job to stay connected, क्योंकि डील्स क्लोज हो रही होती हैं एंड यू कैन नॉट उस टाइम पे आप डिसकनेक्ट नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। तो इसलिए थोड़ा सा इशू हो रहा था, ऐसा नहीं है। और दूसरा ये कि यहाँ पे मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे लोग शोर भी थोड़ा जल्दी बचा देते हैं अबाउट यू नो इफ़ वर्क लाइफ बैलेंस इज़ बैड। तो और यहाँ सुनने वाले लोग भी एक्चुअली होते हैं थोड़े, तो इसलिए मतलब वो उस लेवल पे पहुँचने से पहले थोड़ा सा डीएस्केलेट हो जाता है। तो कंपैरिजन में आई वुड से कि यहाँ पे आहें सुनने वाला एटलीस्ट कोई होता है, प्लस कॉम्पनसेशन इन जनरल बेटर मिल जाता है इफ़ यू हैव बिन इन एनी केस वर्किंग टू हार्ड। So did they require you to have a CFA in advisory in KPMG? No, they did not require me to have a CFA. How much CPA benefit you are getting? How much CPA benefit you in getting job outside country despite having CA? साकिब मसूद पूछ रहे हैं, आप सीपीए कौन सा सीपीए की बात कर रहे हैं? प्लीज़ ये क्लियर करें। सीपीए कनाडा की बात करें तो मतलब ऑफ कोर्स कनाडा में जॉब मिलना ज़्यादा आसान होगा इफ़ यू हैव सीपीए कनाडा। एक मिनट, मुझे ज़रा, मैंने यखनी बनाई थी अपने गले के लिए साथ साथ वो थोड़ी सी पी लूँ। अच्छा, शारिक पूछ रहे हैं, आई एम बैचलर्स इन कॉमर्स फ्रॉम पाकिस्तान, अगर मेरे आर्टिकल्स बिग फोर से नहीं हैं तो मुझे डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ सकती टू मूव टू कनाडा, क्या मुझे मास्टर की डिग्री लेनी चाहिए पाकिस्तान से? आपने मूव कनाडा मूव करना किस बेसिस पे है? मतलब आर्टिकल्स अगर बिग फोर फर्म से नहीं भी हैं, अगर आपने कनाडा मूव करना है ऑन द बेसिस ऑफ यू नो लाइक नॉर्मल इमिग्रेशन प्रोसेस, तो उसके अंदर बिग फोर डजेंट मैटर। उसमें तो आपका वर्क एक्सपीरियंस मैटर्स। और उसके बाद जब वंस आई यू मूव हियर तो उसके बाद जॉब ढूंढनी है, तो अगर आप सीए क्वालिफाई कर लेते हैं। अच्छा, आप बैचलर्स इन कॉमर्स हैं फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ, फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ बीकॉम जो है वो अगर आपने 2 इयर्स स्पेशली किया हुआ है तो वो इतना रिकग्नाइज़ नहीं होगा, फिर आपको मास्टर्स करना पड़ेगा। अगर आपने 4 इयर्स बीकॉम किया हुआ है और फिर आपने आर्टिकल्स, अब मुझे आपकी सिचुएशन समझ नहीं आ रही ऑनेस्टली। टू इंक्रीज़ माई स्कोर फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन, मैम हर क्वेश्चन का सेपरेट आंसर दे दीजिएगा, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। हाँ, आप इंक्रीज़ करने की स्कोर पूछ रहे हैं। अगर आपने इंक्रीज़ करना है स्कोर तो डेफ़िनेटली फिर मास्टर्स हेल्प करेगा आपको इंक्रीज़ करने के लिए स्कोर, दैट्स राइट। मास्टर्स हेल्प करेगा आपको। पर आप ये देख लें कि मतलब मास्टर्स करने में अभी मज़ीद आपको 2 साल लग जाएंगे। उससे पहले अगर कोई तरीका हो सकता है टू मूव टू एनी अदर कंट्री इफ़ नॉट कैनेडा, तो वो ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप कैनेडा के लिए भी मतलब आई एम हियरिंग देयर आर अदर वेज टू डू दैट। कुछ प्रोविंस नॉमिनेशंस भी हैं जो आप कर सकते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें स्कोर रिलेटिवली लोअर होता है। तो आई वुड से कि इस टाइम पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करें, बिकॉज 2 इयर्स अभी आपको मज़ीद मास्टर्स में लग जाएंगे। तो उस वक्त फिर इमिग्रेशन का क्या सिनेरियो होता है आपको नहीं पता। सो आई वुड से ट्राई टू एक्सप्लोर ऑप्शंस जो इस टाइम आपको हेल्प करें। आई होप आपके सारे क्वेश्चन का इस मामले में आंसर हो गया। अच्छा, डू पी आर होल्डर्स गेट प्रायोरिटी फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जॉब्स इन कैनेडा? प्रायोरिटी ओवर हु? मतलब
प्रायोरिटी ओवर हु, क्योंकि यहाँ पे या तो स्टूडेंट या तो सिटीजन्स होंगे या पीआरस होंगे या स्टूडेंट्स होंगे, तो सबको मतलब उन तीनों में तो कोई प्रायोरिटी का लेवल नहीं है। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास पीआर नहीं है, आप पाकिस्तान में या जहाँ भी बैठे हुए हैं दुनिया में, एंड आप वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं कनाडा, तो यू वुड नॉट बी प्रेफर्ड बिकॉज दे वुड वांट टू दे वुड प्रेफर पीआरस, एंड वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप्स बहुत कम मिलती हैं बिकॉज दे आर जस्ट वेरी कॉम्प्लिकेटेड over here. Is 1 year experience in advisory in Big Ten enough to move to advisory in Canada? थोड़ा tough है, but can be done. थोड़ा tough है. If you can get get an interview, and then in the interview you perform really well, it's possible. Chavez Hassan, we barely see Canada audit Big Four jobs on LinkedIn further, as we mostly are from FSC background, CA, ACCA qualification with no graduation degree. So how to hunt Big Four jobs, whether do grad and apply. अच्छा, ये जो आई एम वेरी सरप्राइज कि बिग फोर जॉब्स कैसे नहीं होती। तो पहली बात, आप लोग अगर स्पेशली बिग फोर के लिए ही देख रहे हैं स्पेसिफिकली, तो उनके अपने करियर पोर्टल्स हैं बहुत, और लिंक्डइन पे तो लेट पोस्ट होती हैं चीज़ें। आपको करियर पोर्टल पे नोटिफिकेशन ऑन करना चाहिए और करियर पोर्टल पे देखनी चाहिए जॉब्स। एंड अभी पिछले अरसे में इतनी इतनी जॉब्स पोस्ट हुई हैं, आई वाज रेफरिंग माय फ्रेंड्स, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ करेक्ट। एंड ग्रेजुएशन का इशू डेफिनेटली होता है अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है, बट एज़ फार एज आई नो, वो अगर आप सी ए क्वालिफाइड हैं तो ग्रेजुएशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आपने अगर आप सी ए क्वालिफाइड या ए सी सी क्वालिफाइड नहीं हैं, देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो आई थिंक कि आपको ये अप्रोच चेंज करना चाहिए। आपको बिग फोर की एक तो करियर पोर्टल्स पे जाना चाहिए, एंड दूसरा ये कि जस्ट लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ जिनमें ये नहीं लिखा हुआ कि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, बिकॉज देर आर अपॉर्चुनिटीज़। इवन मैंने अप्लाई किया है, जब मैंने अप्लाई किया था तो उसके अंदर ग्रेजुएशन वॉज नॉट अ रिक्वायरमेंट, इट वॉज प्रेफर्ड बट इट वॉज नॉट अ रिक्वायरमेंट। दे रिक्वायर CPA फॉर स्पॉन्सर्ड वीज़ा जॉब्स। स्पॉन्सर्ड वीज़ा जॉब्स के लिए भी दे वोंट रिक्वायर CPA ऑन द स्पॉट, बिकॉज CPA हो ही तब सकता है जब आप कनाडा आए, बिकॉज CPA कनाडा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा नहीं हो सकता। सो दे आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट इट if they're sponsoring a visa. But as I said earlier, sponsoring a visa is like a rare case over here, बहुत कम cases में होता है ऐसा। I'm doing articles in EVA Islamabad. Subhan पूछ रहे हैं, I'm doing articles in EVA Islamabad indirect tax. Can I find opportunities in Canada as VAT manager or AM after articles and qualification? आई डोंट थिंक आप मैनेजर AM पोजीशन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, और आई डोंट थिंक आप मैनेजर रोल पे यहाँ पे मूव हो सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर आर्टिकल्स एंड क्वालिफिकेशन। यू विल हैव टू मूव हियर एज अ सीनियर कंसल्टेंट, सीनियर एनालिस्ट या जो भी इन द फर्म, इफ़ यू आर मूविंग टू द फर्म। और उसके अलावा आउटसाइड इंडस्ट्री में भी आउटसाइड आपको फाइनेंशियल सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट इस तरह की पोजीशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। एज आई मैंशन, लाइक इफ़ यू वर हियर एट द बिगिनिंग, तो मैंशन कि आपको ये सोच के रखना है कि वट एवर योर लेवल यू आर वर्किंग एट इन पाकिस्तान, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप उस सेम लेवल पे मूव नहीं कर पाएंगे। What's your current role in Canada and perks? Salary. My current role in Canada, I'm currently working in a strategy manager role, like a company है, transportation logistics company है उसके अंदर, and perks बहुत अच्छा है। How is the salary and benefits in Canada, and is it true that 40% of your income gets taxed? That is true that 30%, 30 to 35% of your salary does get taxed, and salaries are मतलब I have nothing to complain about. लोगों को थोड़ा इशू होता है इस बात पे कि हम लोग इतना टैक्स क्यों दे रहे हैं stuff, but I don't know, I don't mind because I'm getting a good life. I'm getting a good infrastructure, I'm getting health facilities. मैं आज मुझे डॉक्टर के जाना था, I booked an appointment, I went, I didn't have to pay a single penny. And जो मैं जिस क्लिनिक जाती हूँ वो प्राइवेट क्लिनिक है, बट बिकॉज वो प्रोविंशियल हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड है, सो आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग। एंड व्हेन आई मतलब अगर आप वो क्लिनिक देखें तो आपको लगेगा आप किसी होटल की लॉबी में, एंड दैट्स व्हाट द क्लिनिक लुक्स लाइक, इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड
मतलब overall like the facilities over here, like I don't mind paying taxes basically. टैक्सेस जब आपको पाकिस्तान में देते हुए दुख होता है आपको टैक्सेस, क्योंकि आपको बैक टैक्स देते देते हैं, फिर भी आपकी बिजली जा रही होती है, ये हो रहा था वो रहा था. आई डोंट माइंड पेइंग टैक्सेस ओवर हियर. एंड overall like it's just the quality of life is so much better that doesn't it's not a problem. Is articles from Big Four necessary to move to Canada or UK? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है. बिग फोर से आर्टिकल्स करना और स्पेशली कनाडा के लिए तो यूके यूके का मैं इसलिए कहूँगी, यूके में जितने भी मैं देख रही हूँ मेरे कॉलीग जब मूव हुए हैं वो सारे डायरेक्टली जॉब के थ्रू मूव हुए हैं. लाइक दे वर अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड देन दे मूव थ्रू अ जॉब. जो लोग कनाडा मूव हुए हैं वो लोग इमिग्रेशन करके मूव हुए हैं. तो इमिग्रेशन में इट डज नॉट मैटर एट ऑल कि आपने बिग फोर से आर्टिकल्स किए हैं या आपने कहीं से भी आर्टिकल्स किए हैं, उसके बाद आपने किसी भी इंडस्ट्री की उसमें जॉब किया है, आपको सिर्फ पॉइंट्स पूरे करने हैं बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंस दैट यू हैव. सो इट डज नॉट मैटर फॉर कैनेडा एट ऑल. वेयर इट मैटर्स इज, फॉर एग्जाम्पल मैं KPMG इस्लामाबाद में काम कर रही थी. आई होप लाइक आई थिंक वी हैव 19 पीपल राइट नाउ एंड आई डोंट हैव टू रिपीट दिस. मैं KPMG इस्लामाबाद में काम कर रही थी एंड व्हेन आई डिसाइडेड कि आई वांट टू मूव टू कैनेडा, तो पहले मैंने PR अप्लाई किया. करेक्ट, स्टेप 1 मुझे PR आ गई. उसके बाद मैंने कहा कि अब आई वांट टू, जब मुझे जिस पॉइंट में मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू मूव टू कैनेडा, तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर जॉब्स. ठीक है, अब व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑनलाइन तो मैंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं किया था. आई वाज जस्ट अप्लाइंग एक्सटर्नली. मैं तो PwC में भी अप्लाई कर रही थी, मैं हर जगह अप्लाई कर रही थी बिग फोर में कि वेयर एवर आई गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी. तो आई गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी विद इन KPMG itself in deal advisory department. So once I got my job offer from KPMG Canada, that's when I told KPMG Pakistan that listen, I've got a job in KPMG Canada and I am moving. It was not an internal transfer, but being in KPMG helped me just like connect better to KPMG Canada interviewers, etc. So that was a benefit that I got, but it no way means कि अगर कोई KPMG में ना होता तो उसको जॉब नहीं मिलती. Okay, so I hope that is clear. If a person has CA and bachelor's, would doing CPA US before moving to Canada help in gaining points? बहुत elaborate questions होते हैं आप लोगों के. ये जैन ने पूछा है. अच्छा, आई डोंट थिंक CPA US के आपको सेपरेट पॉइंट्स मिलेंगे इफ़ यू हैव ऑलरेडी गॉटन पॉइंट्स फॉर CA. आई माइट भी, ये वाली बात आप लोग चेक कर लें बिकॉज वो जो उसका रैंकिंग क्राइटेरिया है उसके अंदर जाके आपको ये थोड़ा डिटेल से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि CPA US के लिए आपको सेपरेट पॉइंट्स मिलेंगे. आई डाउट इट कि आपको CPA US पे फर्दर पॉइंट्स मिलेंगे because they kind of treat it like a, if you do CA and ACCA, they won't give you separate points for both. They will just give you points for CA or ACCA. So I think the same rule would apply for CPA US too. But please don't quote me on that. There is a slight chance I might be wrong in this because I have not encountered this situation or heard about any friend being in that situation. Tax department opportunities outside Pakistan. मतलब टैक्स डिपार्टमेंट तो यहाँ भी होता है ऑफ कोर्स. टैक्स की नॉलेज थोड़ी सी रीजन स्पेसिफिक होती है, बट आई हैव सीन सो मेनी पीपल लाइक मूविंग फ्रॉम KPMG मतलब पाकिस्तान टू Saudi Arab, Middle East बेसिकली टैक्स डायरेक्टली. तो आई डोंट थिंक इट शुड बी एन इशू. स्पेशली मिडल ईस्ट में मूव करना तो बिल्कुल इशू नहीं होना चाहिए. अच्छा, ये लुकमान ने पूछा था सवाल. साकिब मसूद, फाइंडिंग जॉब इन इंडस्ट्री वर्सेस फर्म. इसमें सवाल मुझे समझ नहीं आया. आई एम सॉरी. आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट वन. Is there racism against workers from subcontinent in the West, or they treat all the same? Racism, especially in a place like Toronto, स्पेशली ये जैसे बिग फोर वगैरह है इधर, यू मतलब इन जनरल
this is not a problem at all. I did not face racism at my workplace at all, like zero racism. um, if nothing else, they all made sure I was comfortable at all times. um, मतलब कोई इस मुझे ऐसा भी फील नहीं हुआ कि जस्ट बिकॉज आई रिसेंटली मूव्ड तो मेरे को करियर प्रॉस्पेक्ट्स लिमिट हो रहे हैं या मेरी प्रमोशन लिमिट हो रही है, नथिंग ऑफ द सॉर्ट. विद इन अ ईयर ऑफ मूविंग टू KPMG कैनेडा मेरी फर्स्ट प्रमोशन टू मैनेजर हो गई थी. सो मतलब इस आई मतलब मैं इसलिए सिर्फ टोरंटो की बात कर रही हूँ क्योंकि दैट्स व्हाट आई हैव सीन. मैंने और कॉर्पोरेट्स नहीं देखे, बट एज फार एज आई कैन टेल टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी शुड बी कम्प्लीटली द सेम. बाकी जो स्मॉलर सिटीज़ हैं उनमें भी जैसे KPMG का हैमिल्टन ऑफिस भी है, उधर मेरे इतने पाकिस्तानी कॉलीग्स हैं मतलब जिनका मुझे पता है जो काम कर रहे हैं. आई डोंट थिंक ये वाली प्रॉब्लम आपको विद इन दीज एरियाज फेस करनी पड़ती है एट ऑल. अनलेस आपको मतलब होता है ना कि कोई गंदा इंसान तो कहीं भी हो सकता है, राइट? तो अगर किसी किसी इंसान के दिमाग में प्रॉब्लम है और वो आपका अनफॉर्चुनेटली कोई बॉस टाइप बन गया तो ही रियली कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट, राइट? सो या, सो बेस्ट ऑफ लक आई वुड से. विच वन? अच्छा, आपका सवाल अब कंप्लीट हुआ है. Finding job in industry versus firm, which one is more difficult in Canada? They're equally difficult. It's just that अगर firm, especially अगर आप big four में ले रहे हैं तो उसमें competition बहुत ज़्यादा है, so it's definitely going to be more difficult. People on social media like TikTok are so negative about moving to Canada because of high expenses and taxes, which is discouraging. That is true. मेरे इर्द गिर्द भी कुछ लोग हैं जो इस बारे में वाइन करते हैं कि यार इतनी महंगाई है और देखो घर कितने महंगे हो गए हैं यहाँ पे. तो मेरा उनको यही जवाब होता है कि इफ़ वी वर लिविंग इन पाकिस्तान राइट नाउ छोड़ें, 4-5 साल पहले भी कर लें, या चलो मैं 2.5 साल पहले मूव हुई थी यहाँ कनाडा, तो मैं उस टाइम भी अगर कर लूँ तो उस टाइम भी अगर जो मैं जॉब कर रही थी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई वाज अर्निंग वेल इन KPMG. बट अगर मैं उस सैलरी में से खुद लाइक अलग इंडिपेंडेंट रहती, किराया देती इस्लामाबाद में, खर्चे पूरा करती, ग्रोसरीज वगैरह करती, और उसके बाद मैं सोचती कि मैं घर बना लूँगी 1-2 साल में, तो वो वहाँ भी पॉसिबल नहीं था, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है. तो मुझे ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तानीज़ किस बात पे कंप्लेन कर रहे हैं या मतलब इंडियंस किस बात पे कंप्लेन कर रहे हैं. अगर कंप्लेन करने का किसी को राइट है तो वो कैनेडियंस को है, बिकॉज उनके लिए चीज़ें चेंज हुई हैं. उनके लिए पहले हाउसिंग अफोर्डेबल थी यहाँ पे, अब नहीं है. उनके लिए चीज़ें चेंज हुई हैं. हमारे लिए ये चीज़ नहीं चेंज हुई. हमारे लिए जो वहाँ था वो यहाँ है, बल्कि बेटर है, क्योंकि सिर्फ घर नहीं ले सकते या अदरवाइज़ कोई मतलब हमारी बाकी लिविंग स्टैंडर्ड्स, हमारी बाकी चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से पूरी हो रही होती हैं. तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल कंप्लेन. मतलब मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है कि वाई पाकिस्तानीज एंड इंडियंस कंप्लेन. वी डोंट हैव एनी राइट टू कंप्लेन. अगर कंप्लेन करना चाहते हैं तो वो कैनेडियंस कर सकते हैं. और दूसरा, हम लोगों को इसलिए भी राइट नहीं है कंप्लेन करने का बिकॉज हम मूव होते हैं बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब्स पे. स्पेशली मोस्ट ऑफ यू दैट आई एम टॉकिंग टू राइट नाउ आर going to move as accountants, CAs, ACCAs, etc. So you'll inshallah move, if you are looking to move, you'll inshallah move at good positions, like good salaries, starting positions. तो इसलिए आपको ऐसा भी नहीं होगा कि लाइक बहुत कुछ स्ट्रगल करनी पड़ेगी इनिशियली. कुछ लोग होते हैं जो एज अ स्टूडेंट आते हैं, फिर उन्हें पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती हैं उन्हें जस्ट like sustain themselves. So I would understand if they complain, but I don't understand why people like us complain. And the only thing that I can see might be a bit difficult is कि अगर आप बिल्कुल नए नए कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं और आप बिल्कुल यहाँ पे स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, but you've also brought your family with you, and your family means कि you have like 1 or 2 kids. तो फिर it might get a bit difficult because आप एक कंट्री मूव हुए हैं, उधर आपके इनिशियली बहुत खर्चे होते हैं, then it might get a bit expensive for you. बट अदरवाइज़ अगर आप बिल्कुल मतलब सिंगल मूव हो रहे हैं या जस्ट एज अ कपल मूव हो रहे हैं और आप दोनों यहाँ पे आके जॉब स्टार्ट करते हैं, तो इट्स लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड. मतलब बेसिकली मेरी पूरी रैंट का मतलब ये था कि आई डोंट अंडरस्टैंड.
Sharik here from previous messages. CAF qualified, not getting induction before. Should I move to Canada now on basis of ACC and do masters in Canada now, or move after article in? अगर देखें ये सिंपल सा जवाब दे रही हूँ मैं. अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप मूव हो सकते हैं कनाडा इस पॉइंट पे टू स्टडी एंड देन मतलब ईजी कंफर्टेबली अगर आप मूव हो सकते हैं टू स्टडी, तो देयर इज़ नो बेटर टाइम, यू शुड मूव नाउ. और अगर आप दैट्स गोइंग टू बी लाइक आपको 5 प्लॉट अपने अम्मी अबू के बेचने पड़ेंगे टू मूव टू कनाडा, तो फिर आई वुड नॉट रिकमेंड. फिर you should probably look into first doing your articles, and then from any firm you can do your articles from any firm, and then getting your immigration processed and then moving. But the reason why I say कि आप मास्टर्स इन कनाडा के लिए बेटर है, प्रेफर्ड है, क्योंकि एक तो पहली बात इमिग्रेशन का कुछ पता नहीं आज जो पॉलिसी है, देयर इज़ नो नोइंग 2 साल बाद ये सेम होगी कि नहीं होगी. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट थिंक if you can move right now on the basis of studies, so why not? Did KPMG Canada require you to pursue CPA Canada even though you were in advisory, or did you do it as your own career study goal? They did not require me to pursue CPA Canada. I have colleagues who are not going to pursue CPA Canada at all, actually. But I did it because KPMG sponsor करता है आपको आपका CPA, एंड वो तैयारी कराता है आपके CPA की, एंड देन फिर आपको ये भी होता है कि इवेंचुअली लाइक आपकी किसी भी करियर स्टेप में ये एक बैरियर नहीं बनेगा कि आपके पास कैनेडियन सर्टिफिकेशन नहीं है. So it was just this, part of moving to Canada. So I would recommend it. If you are moving, I would recommend it. Digital analytics. I need details for CPA Canada, as I'm completing ACC and career starting in Canada. So if you're completing ACCA, तो उसके अंदर ये है कि ACCA का, as I was mentioning earlier, if you were around, MOU साइन हुआ था ICAP का, sorry, ACCA का MOU था with CPA Canada, जिसके हिसाब से there was a reciprocal agreement. You didn't have to write any exams. But that after that MOU expired, तो I've been asking some people कि उसमें क्या हो अब क्या हो रहा है. So as far as I know, तो ACCAs को भी अब exams कुछ लिखने होंगे before they can get CPA Canada. So that's what I know, but इस पे clarity नहीं है. For some reason they're not providing clarity, and as far as I know ACCA is really trying to negotiate, but CPA Canada अब full reciprocal नहीं देगा is what I've heard. How to move from Big Four to investment bank, is it possible? मैंने ये मतलब काइंड ऑफ ये वाले रूट एक्सप्लोर नहीं किया, बट मेरे कुछ लोगों से बात हो रही थी जो ये करना चाहते हैं. तो आई हर्ड कि यहाँ से पहले आप प्राइवेट इक्विटी में मूव कर लेते हो या समथिंग. इन्वेस्टमेंट बैंक थोड़ा टफ है, दैट्स व्हाट आई हर्ड, कि यहाँ बिग फोर से इन्वेस्टमेंट बैंक मूव होना थोड़ा टफ है. I've joined small firm where I work on financial planning and analysis side. Okay, that was just a continuation. What are entry level salaries there in firm and industry as well? Entry level salaries, especially if you're joining as financial analyst वगैरह, so I guess like you can expect to start around $70,000 a year, and it varies as per the type of company and industry and everything. Muhammad Zain, which market is better in terms of learning and growth compared to Canada and US? I don't have a comparison, I'm so sorry, but I have not worked in US and I don't have an opinion on it. मैम कितने डॉलर्स चाहिए मूव के लिए आजकल? आई हर्ड कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए डबल भी हो गए हैं क्या है जो डॉलर रिक्वायरमेंट थी. आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट मुझे करंट एग्जैक्ट डॉलर नंबर बिल्कुल नहीं याद. आई एम सो सॉरी. यू कैन चेक इट ऑन CIC, जो कनाडा की इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है. उस पर लिखा हुआ है कि अगर आपने इमिग्रेशन अप्लाई करनी है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, तो आपको अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए डॉलर्स में. सो आई एम सो सॉरी, बट आई रिमेंबर दैट ये नंबर. Is age a factor while moving to Canada? I'm 33 and attempted my last paper of CA. Faizan, if you're applying on express entry program, then age is a factor.
29 ईयर्स या 30 ईयर्स के बाद आपके पॉइंट्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. सो इफ़ यू आर लुकिंग टू मूव एंड वांट टू अप्लाई, तो आई वुड से कि एज सून एज पॉसिबल वुड बी अ गुड आइडिया. Can we move to Canada after US CPA, and is CA enough for fulfilling the credit hours requirement for CPA? CPA US, I think you're, Aswan, I think you're referring to the credit hours requirement of CPA US. तो I've heard कि CPA US की कुछ एक दो states हैं जिसके अंदर आपको credit hours पूरे हो जाते हैं. I forget the name of the states actually. I think I'll ask someone and I'll try to. Aswan, if you are on my Instagram, just drop me a message there. I will try to respond to you there. Once I find out कि कौन से states हैं जिनमें US CPA के credit hours का issue नहीं होता. Asad Habib, which is easiest or less syllabus subject of CFAP? Which teacher would you recommend? Which books did you use? Which is easiest or less syllabus subject of CFAP? मैं समझी नहीं. Which is easiest? मतलब why would you want to? Easiest कुछ नहीं है CFAP में. CFAP पूरा एक ही जैसा है. गंदा. Which teacher would you recommend for CFAP subjects? मुझे CFAP किए हुए बहुत टाइम हो गया. Why are you asking me teacher recommendation में? मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सर बिलाल खालिद से पढ़ा था. ही वॉज रियली गुड. तो आई वुड से मैंने CFAP एक्चुअली मोस्टली सेल्फ स्टडी किया था, एक्सेप्ट आई टुक क्लासेस फॉर FR फ्रॉम सर बिलाल खालिद. आई टुक क्लासेस फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्रॉम वही पैक ऑनलाइन की क्लासेस थी. आई टुक क्लासेस फॉर BFD के सर बहुत अच्छे थे, सर मुबशर, बट वो तो कनाडा मूव हो चुके हैं, वो तो यहीं रहते हैं, तो वो अब नहीं पढ़ाते. वो भी बहुत अच्छे थे, वो भी पैक ऑनलाइन में पढ़ाते थे. एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट. आई डिडंट टेक एनी अदर क्लासेस. मैंने टैक्स भी खुद ही पढ़ा था, मैंने कॉर्पोरेट लॉ भी खुद ही पढ़ा था, मैंने और कौन से थे सब्जेक्ट्स IT टाइप पता नहीं क्या थे, मैंने सारा कुछ खुद ही पढ़ा था उसके अलावा. सो आई डोंट हैव एनी अदर रिकमेंडेशंस. Can ACC qualified with zero experience get internship in Big Four, and if yes, what they will pay? Can ACC qualified with zero experience get internship in Big Four? नहीं, ACC qualified with zero experience ऐसा सुना है कोई यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे यहाँ पे जो भी इंटर्नशिप्स वगैरह होती है ना, यूजली बैचलर्स के लोगों की होती हैं, और वो लोग यूजली अपनी ड्यूरिंग द डिग्री कोऑप्स बोलते हैं उन्हें, वो तो वो थ्रू उस टाइम पे आ रहे होते हैं. तो इसलिए बिल्कुल ज़ीरो एक्सपीरियंस. और आई एम सो सॉरी, मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि वो कितना पे करेंगे. और इफ़ इट्स आई थिंक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, पे का बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं है. Stacy, is it true that CPA Canada cannot be pursued outside Canada? Like you have to. Yes, that's correct. I mentioned it earlier right now. If student reach today, in how many years he can get citizenship? A student reached today. Acha, student. If you're coming as a student, तो उसका ये रूल है कि एज ए स्टूडेंट आपने जितना टाइम गुजारा होता है उसका मैक्सिमम 1 ईयर आप काउंट कर सकते हो टुवर्ड्स योर सिटीजनशिप. एंड देन आफ्टर योर स्टूडेंट, इफ आफ्टर योर like after your studies are complete and you get a work visa and then you're able to convert it to PR, तो उसके बाद आपको मतलब PR के 2 साल लगेंगे. तो 2 साल PR के, 1 साल आपका स्टूडेंट का पीरियड, 3 साल टोटल लगते हैं यहाँ पे टू बिकम अ सिटीज़न. सिमिलर फॉर PRs. जैसे मैं कनाडा में लैंड हुई थी 2.5 साल पहले, तो मेरे पास मुझे मतलब लैंड होने के बाद 3 साल चाहिए टू बिकम अ सिटीज़न. तो इंशाल्लाह इन 2024 आई वुड बी एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप. Okay, I'll ask on Insta. Thanks a lot. Okay, great.
ओके, अच्छा ये आपस में बात हो रही है, गुड, हेल्प ईच अदर, नाइस. Did you move from firm to firm or applied individually yourself? I applied individually myself. I'm applied while I was in Pakistan. So when I moved to Canada, I already had a job. Like मैं कैनेडा KPMG कनाडा के की जॉब पे ही मूव हुई थी. बट मैंने अप्लाई खुद से किया था. इट वॉजेंट अ ट्रांसफ़र. तो उसके अंदर मतलब आप इंटरनल ट्रांसफ़र नहीं था. दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जाहिद. Subhan. Does Pakistanis face language barrier? मतलब इंग्लिश बोलनी पड़ती है. अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते तो फिर लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ेगा. If you're talking about the workplace, and of course in general be, because like people outside will probably talk to you in English unless आप बिल्कुल ही किसी देसी इलाके में रह रहे हैं तो वो होगा. Why did you choose Canada? लुकमान ने पूछा है. So why did I choose Canada? Hmm. मैंने इसलिए कनाडा चूज़ किया था बिकॉज़ मुझे बेसिकली कोई कंट्री ऐसा चाहिए था जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी एक्चुअली. पहली बात तो ये कि सिटीज़नशिप का प्रोसेस लंबा नहीं होना चाहिए. इज़ व्हाट वन ऑफ माय मेन क्राइटेरियाज वाज दैट. मैंने ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन भी देखा था बट ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन बहुत टफ हो चुका था उस टाइम पे. एक तो वो अकाउंटेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था और दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलिया का इन जनरल इशू हुआ था कि वो लोग पीआर देते देते सालों हज़ारों लगा रहे थे लोगों को. तो आई डिड नॉट, मैं उस प्रोसेस में स्टक नहीं होना चाहती थी. यूके का ये था कि इफ़ यू मूव लाइक वहाँ पे वर्क वीज़ा पे तो आपको 5 साल गुजारने पड़ते हैं बिफोर यू गेट दैट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन. तो कनाडा का क्विकेस्ट था. यू जस्ट हैव टू लाइक अप्लाई फॉर पीआर. बैठे बैठे आप पाकिस्तान से अप्लाई करें, आपको पीआर मिल जाती है. 3 साल आप रहें कनाडा में, आपको सिटीजनशिप मिल जाती है. तो दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस. उसके अलावा ऑफ कोर्स कनाडा की एक रेपुटेशन है फॉर बीइंग डाइवर्स. तो दैट्स गुड बिकॉज ऑफ कोर्स आपको रिलेटिवली लेस रेसिज्म का इशू लेस होता है. सो या दैट्स ऑल्सो अनदर रीज़न. एंड देन in general, lesser population, so better, like I don't know, better everything. So yeah, so many reasons. One of the main, of course, was the immigration process was better and 3 years of citizenship. ACC and say Pakistan get equal opportunity in Canada. Yes, they get equal opportunity. How much fluency in English is adequate? Like I can speak and understand basic English, but when I watch movies or seasons, I find it difficult to comprehend. I don't think it's an issue if you can speak and understand basic English. It should be fine. Of course, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं किसी रोल के लिए, राइट, एंड देन आप इंटरव्यू के में क्वेश्चंस नहीं समझ पा रहे उनके, क्योंकि अगर वो गोरे हैं, ठीक है, और वो आपसे इंग्लिश एक्सेंट में पूछ रहे हैं एंड देन we're not able to answer because you couldn't understand the question. So I, of course, like it might be a problem because you would not be able to work with them in the future. So that's why. Does your job include merger and acquisition? For getting into investment banking, private equity, yes. So मेरे एक्चुअली मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी उसमें यही था कि आई कुड ईदर गो टू प्राइवेट इक्विटी, क्योंकि मैं डील एडवाइजरी में काम करी थी, मर्जर्स एंड एक्विजिशन में ही काम करी थी. मैं ट्रांजैक्शन सर्विसेज टू बी स्पेसिफिक में काम करी थी. सो मेरा काम यही था एंड मेरे पास ऑप्शन यही था कि आई कुड ईदर मूव टू प्राइवेट इक्विटी फर्म और आई कुड मूव टू द इंडस्ट्री. So I chose to move to the industry because private equity firm would have meant even worse working life balance. Investment banking तो खैर मैं काउंट ही नहीं करती. वो तो मैंने कभी भी नहीं सोचा because that's just crazy level of workaholicism and I don't that's never on my list. So yes, it's definitely possible to move into private equity. Investment banking, I'm not so sure. MBA if you do an MBA from a good university, then investment banking should be possible. It's just that यहाँ पे competition बहुत ज़्यादा है if you're looking to move to investment banking over here. So you would have to be really good. Does oil and gas and power and generation sector audit experience has demand in Canada, or should I gain experience in financial sector? Oil and gas के ज़्यादातर companies are in Calgary,
तो डेफिनेटली वहाँ पे डिमांड होगी ज़्यादा. फाइनेंशियल सेक्टर की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, बिकॉज Toronto is the hub of financial stuff. So it should be beneficial if you want to do that. But um, I don't think अगर आप ऑडिट से वहाँ पे मूव होते तो यहाँ पे मतलब it like आपको वो उसी ऑडिट में लेंगे. Like I think you can, like if you have audit experience you can be hired in any department and then gain experience for that. I don't think it would limit, unless you yourself want to just move in that department जिसके अंदर आपका अपना experience है. I don't think यहाँ पे उसको वो लोग आपको limit करेंगे. What's your CRS score time of applying for PR? I think मेरा score था 474, 474 I think. What is cost of living in Toronto for a couple? Cost of living in Toronto for a couple. So how do I answer this? So I think if you're earning, if और सुबह मैं ये आंसर करूँगी इन टर्म्स ऑफ क्या, जैसे मैं रह रही हूँ, मैं डाउनटाउन में रह रही हूँ, राइट. डाउनटाउन इज़ एक्सपेंसिव. यहाँ पे रेंट भी एक्सपेंसिव होता है, यहाँ पे ग्रोसरीज भी एक्सपेंसिव होती है. लाइक यहाँ पे शॉप मतलब वही ग्रोसरी जो यहाँ मिलती है वही ग्रोसरी थोड़ा सा शहर से बाहर सस्ती मिलेगी, राइट. तो उस सब को अकाउंट फॉर करते हुए, मोर एक्सपेंसिव लिविंग को भी यहाँ पे अकाउंट फॉर करते हुए, एज अ कपल इफ़ आई वर कितना अर्न कर रही होती तो सही रहता. I guess even if I was earning $90,000 per year, it would have been fine. Like good, it would have been good. If like of course now I'm earning way above that, so it's like definitely more comfortable. But $90,000 should have been fine for me as a couple. Like now, of course, I live with my husband, so it's like with the two of us, of course, it's even better. But yeah, I think that should be sufficient. Is IELTS necessary for PR? Yes, it's necessary. There are good opportunities if you want to move from Canada to US after experience from Canada. It's been 53 minutes, guys. 53 minutes से मैं आपके आंसर्स कर रही हूँ. मुझे 1 मिनट दें, मैं ज़रा पानी पी लूँ. मेरी अम्मी से मुझे इतनी डांट पड़ेगी ना अगर उन्हें पता लग गया कि मैं आज यूट्यूब लाइव करी थी, बिकॉज उन्होंने मुझे कहा था रेस्ट करो. अच्छा, and are there good opportunities if you want to move from Canada to US after experience from Canada? I think yes, पर आपको यहाँ का सिटीजन होना पड़ेगा before you can move to US, because usually jobs in US का अगेन वही इशू होगा कि दे वोंट स्पॉन्सर यू फॉर वर्क वीज़ाज. तो इवन एज अ PR अगर मैं अप्लाई करूँगी किसी चीज़ के लिए इन US, तो अनलेस दे आर स्पॉन्सरिंग मी फॉर अ वर्क वीज़ा आई वुडंट बी एबल टू वर्क देयर, विच अगेन इज़ अ प्रॉब्लम. इफ आई एम अ सिटीज़न तो उसके लिए बहुत आसान है, बिकॉज वो कोई TN7 करके पता नहीं क्या कोई होता है, रिलेटिवली ईजियर प्रोसेस. तो उसके अंदर देर ओपन एंड अ लॉट ऑफ पीपल मूव फ्रॉम कैनेडा टू US. And after how much time you moved to Canada after your articleship ended? I qualified CA in 2018 and I moved to Canada in 2021. Yes. I moved to Canada in 2021, but I got my PR in 2020. जब कोविड आया था, बट बिकॉज कोविड था तो मैं उस टाइम मूव नहीं हुई थी. सो आई गेस 2 years में PR आ गई थी, PR ले ली थी मैंने, एंड देन आफ्टर दैट 1 year में मूव हो गई थी. लुकमान, वर्कफोर्स की शॉर्टेज है क्या कनाडा में जिसकी वजह से सिटीजनशिप का प्रोसेस फास्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़? वर्कफोर्स की बहुत शॉर्टेज है. सिटीजनशिप का प्रोसेस फास्ट क्यों है उसका आई डोंट नो, इससे ताल्लुक़ है कि नहीं.
वर्क फोर्स की शॉर्टेज है, इसलिए इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब कनाडा में बहुत इमिग्रेंट्स बुला रहे हैं बिकॉज यहाँ पे वर्क फोर्स की शॉर्टेज है। आई थिंक सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। मैम हर मंथ सेशन अरेंज कर लिया करें प्लीज़। श्योर, मैं आई ट्राई कि हर मंथ एक दफ़ा एटलीस्ट हो जाए, इफ़ नॉट तो मंथ 2 मंथ्स में एक दफ़ा हो जाए। एक्चुअली वो होता है कि टाइम का थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा ज़्यादा, तो उसमें ये होता है कि लाइक आई हैव टू लाइक फिर मुझे अपना आधा दिन बेसिकली ब्लॉक करना पड़ता है सैटरडे का। तो यूजली होता है सैटरडे को अगर कोई लाइक प्रोग्राम है, कहीं जाना है या घर की सफाई करती है समथिंग, तो वो फिर एक टाइम वो लग जाता है। सो बट आई स्टिल डेफिनेटली ट्राई टू मेक टाइम एंड लाइक महीने में एक दफ़ा या 2 मंथ्स में एक दफ़ा ये करने की करूँगी। थैंक यू जो भी अभी तक आए हैं सवाल किया आपने, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। आई डोंट नो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक दफ़ा आंसर हो जाते हैं, तो आई डोंट नो इफ़ यू वुड वांट लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको अगली बार पूछने होंगे। आई एम एक्चुअली क्यूरियस, सो लेट्स सी। आयशा, पीआर के लिए अप्लाई कब किया था? मैंने अप्लाई किया था पीआर के लिए 2019 के दिसंबर में, और मैं फरवरी 2020 में राइट बिफोर कोविड आ गई थी। सो बेसिकली विद इन आफ्टर कंप्लीटेड माई फुल एप्लीकेशन फॉर पीआर इन दिसंबर, तो उसके बाद 2.5 मंथ्स में मेरी पीआर आ गई थी। आर देयर बैचलर्स रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्किंग इन बिग फोर कैनेडा? नो, देयर माइट बी सम पोजीशंस में रिक्वायरमेंट होती होगी, बट जैसे मैंने जो पोजीशन अप्लाई की थी देयर वाज नो रिक्वायरमेंट फॉर बैचलर्स। Would Oxford Brookes University degree enough for meeting any minimum credit hours requirements for CPA Canada? There is no credit hours requirements for CPA Canada. I don't know Zahid आप किस बारे में पूछ रहे हैं, especially if you are doing ECCA or whatever, तो ECCA के बाद अगर आपने CPA Canada में conversion करना है तो वो एग्ज़ाम लिख के ही होगा। There's no credit hour requirement as such. Aswan Chima, how would you compare IB and private equity culture in Canada as compared to it's crazy everywhere. It's crazy everywhere. इसमें कोई वो नहीं है। Are there good opportunities in elite boutique IB banks in Canada? ये असफन जो है ना बहुत इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फ़ैन लग रहे हैं, और मैं उतनी ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अगेंस्ट हूँ। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के एलीट बुटीक बैंक्स हैं तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दैट बिकॉज एज यू कैन वेरी मच सी इट्स नॉट एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे जो बाकी मेन लाइक जैसे मेन बैंक्स है, सिटी बैंक एक्सेट्रा वगैरह, दे आर ऑल हियर, एंड बेन मैकेंजी वगैरह, दे आर ऑल हियर. So if you're looking for firms like these, then they're all here. So Subhan, how was your colleagues and overall management there? Were they supportive? Is there office politics too? अच्छा, अभी 58 मिनट्स हो चुके हैं, करेक्ट? सो हम लोग लास्ट फ्यू क्वेश्चंस लेंगे बिकॉज आई विल हैव टू लाइक साइन ऑफ इन द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स बिकॉज 1 घंटा हो जाएगा। सो जल्दी से अपने क्वेश्चंस डाल दें। सो Subhan, how is your colleagues and overall management there? Were they supportive? Is there office politics too? Colleagues और overall management बहुत अच्छी है, very nice people, very supportive, guide करते हैं। office politics मैंने note किया है कि होती है, but only for those जो खुद part लेते हैं office politics में। मुझे honestly कभी पता भी नहीं लगा कि office में politics होती है until I met a few people who themselves are involved in office politics. तो उनसे मिल के पता लगता है, ओ शिट, यहाँ पे क्यों होती है ऑफिस पॉलिटिक्स। if you are not involved in office politics, then yeah, you're good. अच्छा, असफन कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड प्राइवेट इक्विटी उनका पैशन है और बहुत अरसे से। आई होप इट स्टेज एज योर पैशन आफ्टर यू हैव जॉइंड अ प्राइवेट इक्विटी फर्म और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, क्योंकि जो मेरा काम था वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्राइवेट इक्विटी नेचर का ही था, और मेरे जो क्लाइंट्स थे वो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती थी। सो आई डोंट नो, आई वाज़न्ट इम्प्रेस्ड. Thanks a lot for your replies and precious time. You're welcome. Thank you so much for everyone for joining. I hope I can do it again. And जो लोग I wish I had mentioned this earlier, but
Yeah, thank you so much for everyone who joined. And yes, and also I would want to, like mention one very important thing. I know it's on the top of minds of almost everyone nowadays, but it's the situation right now in Palestine, in Gaza. So just, make sure that you're doing what you can to give voice to the voiceless of Gaza, basically, and just spread the right message. आप लोग एजुकेटेड लोग हैं तो मेक श्योर कि आप एजुकेटेड मैसेज स्प्रेड करें रादर देन लाइक सेंसेशनलाइज्ड मैसेजिंग जिसमें इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग होती है वो, बिकॉज वो मोर हार्म करेगा टू द कॉज रादर देन गुड करेगा टू द कॉज. सो मेक श्योर कि जो भी आप चीज़ें शेयर करें या न्यूज़ रिपोर्ट्स फ्रेंड्स से शेयर करें या जो भी करें वो आप एजुकेटेड हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मेक श्योर दे फैक्चुअली एक्यूरेट, बट मेक श्योर कि आप यू डू टॉक अबाउट इट एंड यू डू मेक, मतलब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है कि आप अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से बात करें एंड स्टफ. वहाँ पे ये कल्चर नहीं है, आप उनको अप्रोच नहीं कर सकते. बट इफ़ देर इज़ एनी बाय एनी चांस एनी वन जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं यूके वगैरह में, तो मेक श्योर यू कॉल योर रिप्रेजेंटेटिव जो MPs वगैरह हैं, to let them know what your you know that this is important and they need to raise a voice against it in the parliament and wherever they represent. And yes, so that was just a message that I wanted to leave at the end. And thank you so much everyone for joining. I'll inshallah announce another session. Please also jaldi se comments mein let me know कि do you usually follow me on YouTube के post या do you follow me on Instagram? Like where should I post if I am doing such a session? Should I post it on LinkedIn? Should I post it on Instagram? Should I post it everywhere? तो मुझे थोड़ा सा audience का भी idea होता that would be nice. So do leave some comments here if you can. I'll just wait one more minute before I sign off. Instagram. Okay. Instagram. Later. Okay, baby, every forum. All right. Thank you so much, everyone. Bye.